अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। Join quickly. Today we want to solve the very important questions. So join fast. Yeah. Yes. Good evening. Good evening. Good evening, man. Good evening. Hope all of you are fine here. Join as soon as possible. After joining 5 to 6 members, I will start the discussion. Clear? Yes, let's join fast. Today I am here to discuss about the third question. Yes, no? Explain different methods for evaluation of a bacteriostatic disinfectant. सही है ना? थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करना है हमने इधर. सही है? Am I right? Are you getting my voice? Brothers, sisters, are you hearing me? Hello? Hello buddies. Yes, hello. और टी हो गया? टी, कॉफ़ी, टी, समथिंग स्नैक्स? yes. Thank you for cooperating. हाँ हो गया सर. हाँ यस आई तो गुरु ಆಗಲಿಪ್ಪ ಆಗಲಿ. Yes buddies, let's start. Yeah, one more. Yes. Assalamu alaikum my dear brothers and sisters, welcome you all to my YouTube channel Let's Join Pharmacy. Let's start. My dear youngsters, today I am here to discuss about pharmaceutical microbiology 2019 third question. Already we have discussed about the two question. What is pure culture? Explain in detail about isolation of pure culture, and then we discuss about explain the principle, procedure, applications of any one thermal method of sterilization. Now the third question is explain different methods for evaluation of a bacteriostatic disinfectant. See here, this is a third question what you are observing now. Very important question. In every question paper this third question is asked, either in 5 marks or in 10 marks. This third question is fixed here. What is that? You have to explain the different methods of evaluation techniques of a bacteriostatic disinfectant. आपको evaluation techniques को बताना है इधर दोस्तों. Yes. Thermal methods, hot air oven ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ? ಬ್ರದರ್ hot air oven ಹೇಳ್ಬೋದು. Then you can autoclave also tell you. Autoclave also it's a thermal method. Hot air oven it is also a thermal method. Okay. Yes. थर्ड क्वेश्चन, बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. देखिए सबसे पहले मैं आपका टॉपिक क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों. व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मतलब दोस्तों हम इधर चेक कर रहे हैं, करेक्टनेस को देख रहे हैं. मतलब अब बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट वी वांट टू किल द बैक्टीरिया. फॉर एन एग्जांपल, टू क्लीन द फ्लोर ऑफ आवर
a floor of inside our home or inside our room, we will use the phenol, Dettol, etc. Why to use that phenol or Dettol? Yes, absolutely, because to kill the microorganisms. Now, to check the efficacy, yes, very good, disinfectant. Now, to check the efficacy or the approvalness, pureness of that disinfectant, we are using some of the methods here, that is evaluation methods. Let's start those methods. Yes, sir. See here, evaluation of antimicrobial agents, evaluation of antimicrobial agents and disinfectant. Here some of the techniques are there. Just to understand the techniques here, very simple techniques. Techniques or methods used for the evaluation of disinfectant are, first one is a tube dilution and agar plate method. Okay, with the help of the tube dilution and agar plate method, we are confirming the evaluation of disinfectant. Then cylinder plate method, ditch plate method, phenol coefficient method. Okay, phenol coefficient method. Basically here we will study in detail about the three methods: tube dilution, cylinder plate, ditch plate method. Okay, these three are very important here. Clear? Now let's start with the first one, is tube dilution method or and agar plate method. See here, my dear brothers and sisters, the chemical agent is incorporated into nutrient broth. I will tell you by taking the example. Just understand the examples here. For an example, what is this? This is the nutrient broth. Nutrient broth. Wait, I will show you one by taking the example. See here, this is the nutrient broth solution. Broth means what? Basically liquid. The chemical agent is incorporated, means we are inserting that into the nutrient broth or agar medium, that should be inoculated within the text microorganisms. Means we have to keep that nutrient broth with microorganisms, with text microorganisms. Here, these tubes are incubated at 30 to 35 degrees Celsius for 2 days or 3 days, and then the results in the form of the turbidity or colonies are observed. See here, you are observing here 1, 2, 3, 4 test tubes here. One is a slight turbid, then a moderate turbid, then a more turbid. Here the clear solution. Now let's study what are these observations says. See here, this is tube dilution method. Okay, first what we have just added the chemical agents to these agar medium or broth solution. We are added the chemical agents means antimicrobial agents. Okay, is it visible? Yes. Now see, this is the petri dishes or petri plates we have taken. Here no colonies development, approximately 100 colonies, approximately 500, here approximately 1000 colonies. Now it shows that clear solution is good. Yes, clear solution is good disinfectant than the other three solutions. Means just what we are doing means see brothers, wait, yes, just what we are doing means we are taking these four text tubes ये चार जो टेक्स्ट ट्यूब देख रहे हैं ना, these text tube are nutrient broth means inside this the microorganisms are present. Now to these present microorganisms, what we are adding the disinfectant, because we want to check the efficacy or we want to check the capacity, nature of this disinfectant, yes or not. Just what we are doing, we are adding the disinfectant chemical agents to these four text tube. Now after 3 to 4 days we are observing this, is any development of colonies there or any slight turbidity on the text tube. If greater the turbidity means that disinfectant is its holding capacity or its inhibiting capacity is less. Why means turbidity means what here? The growth of microorganisms. Means that chemical agent not shown good result for the microorganisms. Now guess and tell me, in these four text tube,
in these four test tube, which chemical agents acts good? Excellent, you can tell me which chemical agent. Either the chemical agent in clear is good, or slight turbid is good, or moderate turbid is good, or more turbid is good. You tell me. Are you getting my point, my dear brothers and sisters? In these four test tube, we have taken the nutrient broth. Nutrient broth मतलब क्या? जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, वो चारों टेक्स्ट ट्यूब को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेंट रहता है ना, उनको हम क्या ऐड करते हैं? मोर टर्बिडिटी. Yes, more turbidity. More turbidity, my dear brother. Here more turbidity means microorganisms are viable. Here microorganisms are present. More turbidity. More turbidity, it fails the disinfectant property. जिसमें ज़्यादा टर्बिड नेचर रहता है ना, वो डिसइंफेक्टेंट फेल है, हम उसको अप्रूव नहीं दे सकते, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार नहीं रहा है, किल नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको अप्रूवल नहीं दे सकते. आप मुझे ये बताओ, इन चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर किस डिसइंफेक्टेंट को हम अप्रूव दे सकते हैं? मतलब उसे हम, हाँ ये सही है भाई, इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं. टू विच डिसइंफेक्टेंट वी कैन प्रोवाइड इन द मार्केट? Either the clear solution disinfectant or the slight turbid, moderate turbid, more turbid disinfectant. Tell me, my dear brothers and sisters, tell me. It's a very easy answer, so please tell me, cooperate with me. From these, why? Because I am telling means without understanding this concept, you cannot understand the further concept. So for that reason, yes, very good, clear solution, very good, very good. Absolutely, you are right, Mayur. It's a clear solution. Clear solution shows good efficacy, good capacity, good microorganism killing nature. Why means here you are observing, is there any colonies development here? No, no colonies development here. More turbid. More turbid. Why is here? Wait, don't text me. Now I will explain the concept. You got the concept? You got the concept, no? Here more turbid means bacterial development is more. Clear means no bacterial development. No bacterial development. Good disinfectant means it will act on the microorganisms. It will kill the microorganisms. Okay, from these four text tube, the good disinfectant is a clear one. Because here no microorganisms, no colonies. क्या आपको इस तरह के जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, क्या वो इधर दिख रहे हैं क्लियर सोल्यूशन में? नहीं दिख रहे. इसका मतलब हियर द डिसइंफेक्टेंट shows their role, they kill all the type of the colonies. But here, yes, clear solution. Very good, very good. You understand the concept now. Yes. Now let's start the next one. You got this, no? Yeah. Here the next one is the same one, that is of a colony. Colony, we have took the four colonies. Same as usual. We have added the respected agar media to this. Then to that agar media, we are adding the four different disinfectant. After 3 to 4 days, we are observing the growth of colonies. No colonies means greater action of that disinfectant. If the colonies are present means it show as clear solution. Very good. Means colonies development means it shows less disinfectant activity. Okay, the same related one. There we took the nutrient broth. Here we have considered the agar medium. Clear. Now next one is a filter paper, cup plate and cylinder plate method. Cylinder, filter paper, cup plate and cylinder plate method. It is also one type of the evaluation technique. Okay, correction technique for the disinfectant or antimicrobials. Yes. See here, in these methods the agar is melted. What we are doing here? Here in this method what we are doing, we have to melt the agar, then it should be cooled at 45 degree. It should be cooled at 45 degree Celsius. Then inoculated with the text microorganisms and poured into the sterile petri dish. इधर हमें क्या करना है? अगार शुड बी मेल्ट करना है. अगार को मेल्ट करके कूल करना है 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर. देन उस अगार को है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम उस अगार के अंदर ऐड करना है. ओके, टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Then in a cup plate method, when the inoculated agar has solidified, okay, in that cup plate method, when the inoculated agar
agar has solidified, then holes of 9 mm diameter are made in the medium. 9 mm diameter हमको बनाना है, दिखाऊंगा मैं बाद में आपको. See here, just an example. What is this? This is the, what is this? This is the agar medium. Wait, yes, this is the agar medium. Agar medium, what we are adding? We are inoculating the microbes or microorganisms. Then after addition to that, we have to make a holes inside this. हमें छेद बनाना है, 4 तरह के छेद बनाना है हमें. किसके अंदर? इन पेट्री प्लेट्स के अंदर छेद. We have to make the holes. The antimicrobial agent is directly poured into the holes. Then हमें क्या करना है? The antimicrobial agent should be poured here. चारों के अंदर हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट या डिसइंफेक्टेंट को ऐड करना है. अब देखते हैं. इन द फिल्टर पेपर एंड सिलेंडर प्लेट द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस इनोकुलेटेड इनटू अगार. लेकिन हम ये जो मेथड है ना, ये कप प्लेट मेथड का है. फिल्टर पेपर के अंदर और सिलेंडर प्लेट के अंदर जो है ना, उस सरफेस के ऊपर उतना ही हमको एंटीमाइक्रोबियल एजेंट लगाना है. सरफेस के ऊपर बताऊंगा मैं आपको. यस, लेट्स गो विद द डायग्राम. See here, what you are observing? What is this? We have made the holes here. 1, 2, 3, 4, 5 holes. Holes we have made here. The zone of inhibition is observed after incubation at 30 to 35 degree Celsius for 2 days. जब हम इसको 2 या 3 दिन के बाद इंक्यूबेट करने के बाद हमें ये इस तरह का सर्कल्स या इस तरह के होल से दिखाई देंगे दोस्तों. नाउ द डायमीटर ऑफ द होल of the zone of inhibition gives an indication of the relative activities of the different antimicrobial substances against the test microorganisms. See here, ज़्यादा जो देखो, ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है ना, अभी ये छोटा डायमीटर, ये छोटा डायमीटर, ये छोटा डायमीटर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इट एक्सप्लेन द लेस एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी. मतलब देखिए, एक छोटा डायमीटर, ये बड़ा डायमीटर, ये थोड़ा मीडियम साइज़ वाला, ये उससे मीडियम साइज़ वाला. अभी क्या होता है इधर? हालांकि हमने कितने डायमीटर्स बनाया था? फॉर एग्जांपल, इनिशियली वी मेड 1 mm डायमीटर्स होल्स. व्हेन वी पोर द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इनटू दीज होल्स, देन आफ्टर 2 to 3 डेज, जब हम 2 से 3 दिन को इंक्यूबेशन पीरियड में रखने के बाद, उस समय दीज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट शोज देयर एक्टिविटी. इफ द होल्स आर स्प्रेड वाइडली, अगर ये होल है ना, अगर ये चारों अतराफ में ज़्यादा फैल गया, देन इट्स एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी इज ग्रेटर. ज़्यादा फैलेगा मतलब द एक्शन अगेंस्ट दोज माइक्रोब्स इज ग्रेटर. फैलना मतलब सरफेस एरिया को, मोर सरफेस एरिया को कवर करना, एक्सेलेंट सरफेस एरिया को कवर करना. ओके, दिस वन. ओके, नाउ वी कंसिडर दिस वन इज द होल. Now these hole, after 2 to 3 days, it acquires the space until here. Okay, until here. The microorganisms which present up to here, they will die. Are you getting my point? They will die. Now this is also same pattern. Greater the surface area covered by the disinfectant, greater the microorganisms will be died. This is the cup plate method. Now the next one is the ditch plate method. डिच प्लेट मेथड देखिए दोस्तों, बेसिकली हियर एक्वेस सोल्यूशन को हम इधर यूज़ करते हैं. एक्वेस सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, एक्वेस सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट को टेस्ट करने के लिए, अ सोल्यूशन ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस इज केयरफुली रन इनटू द डिच विच इज प्रिपेयर्ड इन एन अगार प्लेट. मैं आपको बताऊंगा इधर. ये देखिए, दिस इज द अगार प्लेट. ओके, अगार प्लेट. इधर हमको क्या करना है? एक साइड में डिच एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को डालना है, पोर करना है एक साइड में. आगे देखते हैं, चलिए. केयरफुली वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू इन अ सोल्यूशन ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस इज केयरफुली रन इनटू द डिच विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अगार मीडियम. ये अगार मीडियम के अंदर हमको क्या प्रिपेयर करना है? एक पाथवे क्रिएट करना है. दैट पाथवे कंटेन द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. A loopful of each text microorganisms is then streaked outwards from the ditch on the agar surface. अब क्या करना है? हमें एक लूप लेना है. लूप लेके क्या करना है? जस्ट स्क्राइट करना है, स्क्रैच करना है. किसके ऊपर से? इस अगार मीडियम से हम ऐसा स्क्रैचेस करना है, 1 or 2. Then the microorganisms resist to the
antimicrobial antimicrobes grow right side of the ditch plate. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्ट है एंटी माइक्रोब्स को, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का उन पर इफेक्ट नहीं दिखा रहा, वो एंटी माइक्रोब से राइट साइड ग्रो करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए दीज एंटी माइक्रोबियल विल ग्रो ऑन द राइट साइड. Now susceptible microorganism shows zone of inhibition at center of the plate. चंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या दिखाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, दे विल शो जोन ऑफ इनहिबिशन, मीन्स दे स्टॉप देयर एक्टिविटी. वाई? बिकॉज ऑफ द डिसइंफेक्टेड. ओके, द विड्थ ऑफ द इनहिबिशन गिव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट. मतलब अगर विड्थ ज़्यादा रहा, ये लेफ्ट साइड में अगर विड्थ ज़्यादा रहा तो हमारा डिसइंफेक्टेंट गुड है. अगर राइट साइड में विड्थ ज़्यादा हो गया तो वो डिसइंफेक्टेंट इट्स नॉट गुड. वाई? मीन्स राइट साइड व्हाट हैपन्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग, बट लेफ्ट साइड व्हाट हैपन्स, हियर द डिसइंफेक्टेंट्स किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जो सीधे साइड है ना, राइट साइड में, वो साइड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते जा रहे हैं. हमको ग्रो नहीं होना है इधर, इधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होना है, डेथ होना है और इनहिबिट होना है. उसी लेफ्ट साइड के अंदर जब हम देख रहे हैं उधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेथ हो रहे हैं. मतलब ये जो एक्टिविटी है ना, डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी ग्रेटर है, इट शोज ग्रेटर एक्शन टूवर्ड दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट. सॉरी, दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट शोज ग्रेटर एक्शन टूवर्ड्स द माइक्रोब्स, दे स्टॉप्स देयर डेवलपमेंट. इसी को हम डिच प्लेट मेथड कहते हैं. समझ में आ रहा है ना, दिस इज नोन एज डिच प्लेट मेथड. Now the last method is a phenol coefficient method. See here, in the phenol coefficient method, a test chemical is rated for its microbicidal property. Okay, sidal. Static matlab what? Static means stopping. Understand this concept. Sidal means killing. Here it is very special. In the phenol coefficient method, a test chemical is rated for its microbicidal property. Means the antiseptics or disinfectant which we are using against the microorganisms, no, those disinfectant will kill the microbes, they will show killing property. It is special here. In this test, similar quantities of microorganisms are added to the rising dilutions of phenol and the disinfectant to be tested. That's what we are doing here. Similar quantities of microorganisms we are adding, just we take one test tube, we have to add the similar quantities of microorganisms to those test tube. Okay, test tube, to rising dilution of the phenols and the disinfectant to be tested. Means just we have to take the phenol, it is the disinfectant. To that phenol what we are doing, just we are adding the microbes. If the microbes shows a death, means if no precipitate, means what happens, अगर precipitate नहीं रहा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेथ हो रहे हैं, वो डिसइंफेक्टेंट का प्रॉपर्टी क्लियर है. इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम सोज प्रिसिपिटेटेड मीन्स दोज आर ग्रोइंग इनसाइड दैट फिनॉल, फिनॉल के अंदर ग्रो कर रहे हैं, मतलब उसका डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी उतना क्लियर नहीं है, प्रॉपर नहीं है. क्लियर, समझ में आ गया ना. Are you getting my point? Hello. Any doubt means you can ask here. It is a 10 marks question, very important. If you are facing any doubt means just you are ask me. Yes. Any doubt means you can ask me. If you write this 3 methods, no, you can get the 10 marks. Yes. Let's discuss about the next question. Next question is very special here. Now let's discuss about the 5 marks question. Give the principal and main characteristics of the phase contrast microscope. Yes. Now the main characteristic of a phase contrast microscopy. My dear brothers and sisters, see here, this is a very important question. Yes, ask me, man. Ask. Ask your doubt, ba.
You tell me, why do we use microscope basically? Basically we will use a microscope to study the morphological structure of the cell or any species. Okay, means we will magnify the object. For the magnification purpose, for the clear visual purpose, we are using the microscope. Some means some objects which are naked to our eyes, those organisms we cannot see, those means they are unable to see with our naked eyes. So at that time what we are doing, we are using this microscope. Okay, microscope we are using. Now the very important microscope that is of see phase contrast microscope. These phase contrast microscope, they have asked the principle and the characteristics, characters. Basically first you write this diagram, path of light rays in phase contrast microscope. Simple, very simple diagram is there. Phase contrast microscope, you just draw this diagram. It is the eye point, it is eyepiece, image line, then phase shifting element, diffracted orders, specimen, it is condenser, annular diaphragm. Simple is there. You just understand this one. I will add it in the description. You don't worry about the notes, I will add it. See here, just I will explain the principle and characteristic, means the advantages of this microscope. Which one? That is a phase contrast microscope. This microscope, phase contrast microscope, it helps to identify the bacteria which doesn't acquire the stain. Means some bacteria they doesn't acquire the stain. वो बैक्टीरिया स्टेन नहीं लेते, वो फंगी स्टेन को एक्वायर नहीं करते. उस समय हम क्या करते हैं, इन माइक्रोस्कोप को उनके स्लाइड्स के अंदर रख के हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है. ओके, इफ वी ऐड द स्टेन मीन्स दो आर विजिबल टू अवर आइज. समझ में आ रहा है ना? सो स्टेरिलाइजेशन बैक्टीरिया, स्पोर, टेटानस, मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया, हाइपरसेंस. देखिए दोस्तों, स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, हम स्टेराइलिटी जो है ना, स्टेराइलिटी जो प्रोसेस है ना, ये स्टेराइलिटी प्रोसेस मतलब पायरोजन से पकड़कर, मतलब उनके बैक्टीरिया के बच्चों से, पायरोजन मतलब उनके जो डॉटर्स हो या सन हो, उनसे पकड़ के हम अडल्ट तक उनका इनहिबिट कर सकते हैं. स्टेरिलाइजेशन मतलब ये स्पोर ऑल्सो वी आर डिस्ट्रॉइंग, एवरी पार्ट गेट डिस्ट्रॉयड, नॉट ओनली a single bacteria but the spore also get destroyed here. Sterilization technique. In that sterilization technique, gaseous sterilization is very important. Nowadays we are using gaseous sterilization. Yes sir. Now let's continue. Phase contact microscope. देखिए दोस्तों, phase contact microscope बेसिकली जो बैक्टीरिया स्टेन नहीं एक्वायर कर सकते, उन बैक्टीरिया को हम इन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. ओके, स्टेनलेस बैक्टीरिया को हम इन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं दोस्तों. वी कैन इजीली ऑब्जर्व द स्टेनलेस बैक्टीरिया एंड दिस माइक्रोस्कोप they will give good morphological structures. They help to understand the inner cell wall, organelles of the cell. Every inside character also can be visualized by this microscope, phase contact microscope. Hypersensitivity and hypersensitivity 1. Hypersensitivity मतलब दोस्त, देखिए, those bacteria which shows a sensitive means hypersensitivity means now for an example, plastic materials, these are sensitive materials. For these plastic we cannot heat कर सकते हैं क्या हम प्लास्टिक को? नहीं. Some materials are sensitive in nature, some materials are hypersensitive, some materials are hyposensitive, some materials are thermostable. Means you can give large amount of heat also, they can withstand some materials. But some materials on a small amount of heat they get melted, they change their physical property. Now आप एक काम करिए, आप प्लास्टिक का ब्रश लीजिए, उसको हीट कीजिए, मेल्ट हो जाएगा. Yes, absolutely.
मेल्ट, इट विल लॉस देयर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, लॉस हो जाएगा ना। इसलिए दोस्तों ये सब हम मद्देनज़र रख के हमको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना है। उसी तरह आप आयरन बार, यू टेक द आयरन बार, इट इज़ द thermostable, we can heat it about 300 to 400 degree Celsius, no matter for that, we can easily heat stainless steel also. Okay, now let's study the principle of this. See, a principle is simple here. What this mainly based on the principle of the external light and internal light. ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्सटर्नल लाइट और इंटरनल लाइट दो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। एक्सटर्नल लाइट मतलब सन, देखिए हियर लाइट सोर्स, ये जो लाइट सोर्स दिख रहा है ना, दिस इज द लाइट फ्रॉम द सन, एक्सटर्नल लाइट वी आर गिविंग, और बाय मीन लाइट सोर्स मीन्स सन ऑल्सो, और बाय मीन्स ऑफ द ट्यूब लाइट वी आर गिविंग द एक्सटर्नल लाइट हियर। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज द स्पीसमैन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें देखना है। ओके, वेलकम मैन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें देखना है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इधर हम प्लेस करेंगे ये प्लेट के अंदर, स्पीसमैन प्लेट के अंदर। जब हम देखेंगे ना दोस्तों, इन द प्रेजेंस ऑफ द सोर्स दैट इज सन, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, दिस अ लाइट सोर्स व्हाट हैपन, सो इट विल डायरेक्ट्स द इमेज टुवर्ड्स द दिस वन, विच वन, दैट इज द डिफ्रैक्टेड ऑर्डर्स। फर्स्ट क्या होता है, ये जो लाइट है ना, लाइट स्पीसमैन को डायरेक्ट करता है। ओके, देन दीज स्पीसमैन लाइट, नाउ स्पीसमैन को लाइट हाई, नाउ द लाइट फॉर दिस स्पीसमैन विल बी फॉल्ड बाय मीन्स ऑफ द रिफ्रैक्टेड वन। अभी देखिए लाइट सोर्स जो है ना दोस्तों, लाइट सोर्स एक एक्सटर्नल लाइट है, इंटरनल लाइट मतलब द लाइट फॉल फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, एक लाइट एक्सटर्नल। अब वो जो कंडेंसर को लग के वापस जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइट बोलते हैं। नाउ दीज एक्सटर्नल लाइट एंड इंटरनल लाइट बोथ द जॉइंट्स, एक्सटर्नल लाइट एंड इंटरनल लाइट, दोनों एक्सटर्नल लाइट और इंटरनल लाइट दोनों ज्वाइंट क्या करते हैं, वो जो स्पीसमैन जो रहता है ना, हाँ, दे हेल्प्स टू मैग्नीफाई द स्पीसमैन को मैग्नीफाई करते हैं। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द स्पीसमैन अंडर दिस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी मीन्स द डिवाइस, कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी डिवाइस, you can easily observe the specimen cell wall. Okay, how? By means of the light. कंडेंसर भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इधर। कंडेंसर जो आप घुमाते हो ना लाइट को आपकी तरफ खींचने के लिए, इस तरह माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा है। फ्रॉम वेयर यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स, फ्रॉम वेयर, ओके बाय ब्रदर, later I will tell you. By I am preparing notes by Thakur publication, Nirali publication, PV publication, many books I am referring. Here now you understand this concept. Do you got this concept? Simple here. What we are doing, the external light is passing here. It is the microscope. Kuch postulate simple, tell in Kannada. Okay. So I will put the link in the description. You don't worry about the notes. Just basic is understand the concept. ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, देखिए ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಕನ್ನಡ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನಾವು ಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಲೈಟು ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ, ಸರಿ, ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ದ ಲೈಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟು. ಈಗ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್. ನಾವು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಸ್ಮೆನ್ ಇಂದ ಆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ದೆನ್ ಆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಕೈತಿ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ ತರ ಮಿರರಿಗೆ ಇಡ್ರಿ ನೀವು, ಏನಾಕೈತಿ ಆ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಕತ್ತಾ? ಹೌದಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಕತ್ತಾ? ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್
ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಕ್ಕೋವಿಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದೇ ಬೋತ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ image, clear image. Okay, clear image. Okay, clear image. How they will show? Just by joining the refracted light and the original light. Now my dear brothers and sisters, if the specimen is invisible, means they are not visible, means just what we are doing with the help of this annular diaphragm, we are setting that. हम उसको सेट करते हैं दोस्तों. इतना ये पाथ ऑफ लाइट रेज फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप. coach postulates simple telling. I will tell you later, you don't worry about that. Okay, got this concept clear? Yes my dear brothers and sisters. Now let's move towards the next question. I will upload the notes, you don't worry. The next question in 5 marks is describe the bacterial growth curve. See what is bacterial growth curve? It is also very important bacterial growth curve. Bacterial growth curve mainly they are having the three phases. One is development in their size, next one is in the development in their numbers, then the stationary phase, decline phase. Okay, these all are the phases which comes under the development means bacteria. I will tell you, I will understand the concept here. Just to see, refer the textbook if you are having and not prepare the notes for that. Sorry my dear brothers. Bacterial growth curve. Yes, bacterial growth curve 3.2. I will prepare and just I will add. You don't worry about that. Yes, bacterial growth curve. Yes, see here. This is the bacterial growth curve diagram. One is a lag phase, log phase, stationary phase, decline phase. Yes, see, this is the time taken. It is the time. This is the number of cells. Now, however the time increases, what happens? The number of cells decreases. जैसे टाइम इंक्रीज होते जाता है उसी तरह से नंबर ऑफ सेल्स जो है ना डिक्रीज होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. See, in the lag phase what happens? In the lag phase there is only development of the microorganisms. Here microorganisms सिर्फ डेवलप होते हैं. डेवलप मतलब इनिशियल स्टेज. हियर जो लॉग फेज से इनिशियल स्टेज है, लैग फेज मतलब यहाँ सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना इकट्ठा करते हैं. They will just store the food for them for their development in the lag phase. Okay, they just increase their size increase होता है, साइज सिर्फ इंक्रीज होता है साइज, बट नॉट इंक्रीज इन द नंबर हमें नेक्स्ट फेज के अंदर पता चल जाएगा. बट इन लॉग फेज व्हाट हैपेंस? इन लॉग फेज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंक्रीज इन नंबर्स. यार इंक्रीज नंबर होता है, मैंने आपको बताया था. लैग फेज के अंदर सिर्फ साइज इंक्रीज होता है या खाना इकट्ठा किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा. लॉग फेज के अंदर वही खाने को खा के they will eat these food ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಏನಕ್ಕವು they will start a replication, they will start a division. Okay, then after some times what happens? ಈಗ ಎಷ್ಟು they will having for an example there are 10 members in a room. For 10 members they are having 2 full plate of biryani, 2 full plate. Now those 10 members they will eat that 2 full plate of biryani for 2 days, for an example, for 2 days. However, by eating half or 1.5 or 1/4, okay, they will maintain a strategy for that and they will complete in the 2 days. Now what happens? The food get finish. उनका खाना तो ख़त्म हो गया अभी. Now no food means no development. No food means no development. No development means stationary. अगर डेवलप भी नहीं हो रहा है, फूड भी नहीं मिल रहा है, तो स्टेशनरी फेज है, कुछ भी नहीं एक्शन हो रहा है उधर, जस्ट स्टेशनरी. दिस फेज इज प्री स्टेज फॉर द डेथ वन. इसके बाद में जो आता है ना डेथ फेज दोस्तों, हाँ, दैट इज अ डिक्लाइन फेज. इन डिक्लाइन फेज व्हाट हैपेंस? ड्यू टू द इम्प्रॉपर or
deficient of the nutrients required for the microorganisms, okay, due to the lack of the nutrients, these microorganisms start die. They will die. Why? Because no food for them. ओके, अगर हमको 3 से 4 दिन चलेगा, हफ्ते तक 2 हफ्ते तक अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो तब भी चलेगा. चलिए 1 महीना पकड़ लिए, 1 month, 2 month, कैन वी सर्वाइव फॉर 1 and 2 months? नो, नो, वी विल डाई देयर. For that reason, the same here. As the time increases, what happens? As the time increases, the growth of bacteria decreases. I will explain one more time. Now you take one culture media. This is the one culture media. Now in this culture media, you add what you add? You add the nutrients for those microorganisms. Nutrients for those microorganisms. Now first that those bacteria, what they will do? They will collect the food. They will start bulging in nature. Means they are just sizing their body for 2 days. After 2 days, those bacteria will start replication or they start dividing. Okay. Now what happens? As usual, the bacteria is growing. Now what happens? The food there get reducing. खाना खत्म होते जा रहा है उधर. कैसा? जैसे 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 इंक्रीज हो रहा है बैक्टीरिया का नंबर, उसी तरह खाना खत्म होते जा रहा है. समझ में आ रहा है ना? हाँ. नाउ व्हाट हैपन्स, एक सर्टन स्टेज के अंदर उस बैक्टीरिया को खाना मिलना बंद हो जाता है. उस समय क्या होता है? दोज स्टोज द स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज मतलब इट इज़ द प्री स्टेज ऑफ द डेथ. अभी एकदम खाना बंद हो गया. ऑल द न्यूट्रिएंट्स गेट कंज्यूम्ड बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द वेस्ट प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली एक्सक्रीटेड ऑन द दैट दिस पेट्री प्लेट और अगार मीडियम. वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते जा रहा है. नाउ व्हाट हैपन्स? Suddenly the graph falls down, means decline phase, death of microorganisms. Simple concept. This is the bacterial growth phase. You have to write this one in the point wise fashion. Means first you write a lag phase, then log, stationary, then decline phase. If you explain these points what I have added, no, you will get the 5 marks there. The main important, the supervisor will see, means this one, the diagram. He gives more concentrated on the diagram. If your graph is perfect with the labelings, means definitely you will get the 5 marks. Just explain 2 to 3 points there, means you can easily get the 5 marks there. Now the next question for your examination purpose is yes, write the procedure, merits and demerits of membrane filtration. My dear youngsters, membrane filtration, it is also a very, very, very important method in the sterility testing. Which one? It is the very, 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 very good. Yes, hello. Yes, we are using a sterility testing. I will show you the notes for that sterility testing. Just wait a minute. Sterility testing. यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टेराइलिटी टेस्टिंग मतलब क्या? स्टेराइल मतलब ये अगर कंपोनेंट स्टेराइल है या नहीं हमको चेक करना है. फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग दिस कैप. नाउ ऑलरेडी आई हैव स्टेराइल दिस कैप. हमने स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर इसको स्टेराइल करा है. अभी हम इसको स्टेराइलिटी टेस्टिंग के अंदर भेज के हमको चेक करना है इफ दिस स्टेराइल, इफ इट इज स्टेराइल और नॉट. इफ माई पाउच इज स्टेराइल मीन्स देन आई विल अप्रूव फॉर द प्रोडक्शन. If my pouch is not sterile, if it contains some of the pathogens or harmful microorganisms, then I will dispose it or I will re-sterilize that. फिर से हमको एक बार स्टेरलाइज करना है. यही फैशन के अंदर हमको स्टेराइलिटी टेस्टिंग पर काम करना है. नाउ व्हाट दे विल आस्क, डिस्क्राइब, राइट द प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस स्टेराइलिटी टेस्टिंग. स्टेराइलिटी टेस्टिंग का आपको डिफिनीशन लिखना है, देन उसका इंपॉर्टेंट लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है. उसके बाद में जो है ना दोस्तों, आपको 2 मेथड है बेसिकली इन फॉर स्टेराइलिटी टेस्टिंग. वन इज ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, द सेकेंड वन इज ऑफ द डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड. मेथड ए एंड मेथड बी, दीज आर द 2 मेथड्स फॉर द स्टेराइलिटी टेस्टिंग. फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन, डायरेक्ट इनोकुलेशन. नाउ हियर दे वाज पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड. देखिए दोस्तों, here the membrane filtration method means a simple membrane means a filter paper.
membrane, the porous material, the porous cloth we are taking for maintaining the sterility here. Okay, just understand the concept. This method is a preferred method. This one is one of the preferred method here. The substances being examined as oil, ointment, ointment solution. Okay, basically oils, creams, ointments for the sterile, means checking of sterility for the oils, checking of sterility for the creams, for the suppositors we are using, means suppositor pigments. Inside the suppositor what the pigment is present, no, what the base is present, no, for that we are using this membrane filtration method. Okay, membrane filtration method. This method is utilized for only liquid substances. If the substances is liquid, at that time only we are using this membrane filtration method, because we want to collect the filtrate. हमें फिल्ट्रेट को कलेक्ट करना है. ओके, देन जो ऊपर जो बचे रहता है ना सब्सटेंस, हाँ, उसको हम कलेक्ट करना है. वहाँ चेक करना है हमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है या ना नहीं हो रहा है, इसका स्टेरिलिटी अप्रूव है या नहीं है, उसको हमको चेक करना है. लेट्स स्टार्ट दिस. The sterility test apparatus consists of a closed reservoir and a container to collect the filtrate. देखिए इस जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो अपरेंट है ना, ये क्लोज रिजर्वायर की तरह रहना है. एंड कंटेनर शुड बी कलेक्ट द फिल्ट्रेट. आपको बीकर पता है ना, बीकर आप देख रहे हैं. बीकर के ऊपर अगर आप एक कवरिंग प्लेट if you place on that beaker, means it will covers that beaker. Now that covering plate should contain the pores, small pores on the top of that plate. Now if you pour any solution, means it will collect the filtrate down. Filtrate को collect करता है ना. Now let's understand the concept. Membrane generally suitable for sterility testing has a normal porosity of 0.45 micrometer μm. Then diameter should be 5 mm. Then flow rate 55 to 75 ml of वाटर पर मिनट के अंदर 75 टू 55 ml ऑफ वाटर उसके जो होल्स है ना, जो मेम्ब्रेन है ना, उससे पास होना है. हाउ मच? 55 टू 75 ml, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर. और दैट पोरोसिटी मस्ट बी 0.45 म्यूएम पोरोसिटी. उसका डायमीटर, जो फिल्टर पेपर का जो डायमीटर या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का जो डायमीटर रहता है ना, दैट शुड बी 50 mm. ओके, 50 mm. नाउ let's discuss one method here, method of filtration, method of test here. The first one is for aqueous solution. Transfer aseptically the quantities of the preparation using being examined through the membrane. बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है. मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल. जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू. Yes, now see, this is the container. Now transfer aseptically the quantities to prepare the preparations being examined through membrane. This is the membrane here. The membrane having the pores here. इसके अंदर pores रहना है. Pores, it should be having the small holes here. Now what happens? Draw the liquid rapidly through the filter with the help of the vacuum. हमको क्या करना है? Just we have to take the टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें स्टेरिलिटी टेस्ट करने के लिए दे रहता है ना, उसको लेके हम इस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के ऊपर पोर करना है. धीरे थोड़ा करके हमको पोर करना है. ओके, विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम एयर कलेक्ट करता है दोस्तों. इफ एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ दैट मीडियम, मीन्स इट कलेक्ट द एयर. समझ में आ रहा है ना? नाउ सी, टू मेम्ब्रेन्स, देन द मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड aseptically, then to aseptically cut to one part is immersed in the 100 ml of soybean casein digest medium and incubated for 20 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉट लेस देन 14 days. मतलब 13 से 14 दिन तक हमें इसको इंक्यूबेट करना है. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अभी ये फिल्ट्रेट, नीचे फिल्ट्रेट है, ऊपर हमको फिल्टर जो मिला है, सॉलिड प्रोडक्ट मिला है. इसको सॉलिड प्रोडक्ट को हम क्या करना है? जस्ट वी विल मेक 2 parts ऑफ दिस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. एक पार्ट और 2 पार्ट. द 1 part शुड बी इमर्स्ड इन द सोयाबीन केसिन.
ये जो एक पार्ट रहता है ना, उसको हम सोयाबीन केसिन के अंदर डालना है, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, देन इट शुड बी इंक्यूबेटेड फॉर 13 और 14 डेज एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. देन व्हाट हैपन्स, देन सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट और एक पार्ट जो बचा रहता है ना, उसको हमें थायोग्लाइकोलेट, लिक्विड थायोग्लाइकोलेट मीडियम के अंदर सेम नॉट लेस देन 14 डेज को, उसे भी 20 to 25 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमको इंक्यूबेट करना है. ठीक है. आफ्टर 13 days or 14 days if we saw any microbial growth there, means it shows that the sterility testing fails. अगर ग्रोथ हो रहा है तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग फेल्स है. इफ नो ग्रोथ मीन्स we approve our sterility. The product which we have taken, for an example, we took the cream or ointment, if you filter to the filter media, okay, हमें चेक करना है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एक इंडियन फार्माकोपिया से दिया जाता है. फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ऑइंटमेंट्स शुड बी 0.0001%, हमारा जो आया रहता है ना, हमारा जो आया रहता है एक्यूरेसी, that should be checked with the standard protocol. We got the standard protocol 0.0001%, means we can approve the product, we can approve this product in the market. Simple. This is the membrane filtration type of the method. For what reason we are using? To maintain the sterility, my dear brothers and sisters. Yes, these we completed 3 questions in 5 marks and 1 question in 10 marks. Now inshallah in next class we will discuss the whole next questions from 7th one to 12th one, the next repeated question. These are very important questions. Gram staining, replication of virus, then main sources of contamination of aseptic room, then assay of streptomycin antibiotic assay, then microbial contamination in pharmaceuticals, requirements of a cell culture laboratory. Very important. The next coming questions are really very important. Definitely if you practice those 1 2 3 4 5 6 questions, means every year these questions are repeated. In 4 to 5 questions are repeated every year. So inshallah in next class we will come through these next upcoming questions with the detailed answer. You don't worry about the notes. I will upload the notes in the description. My dear brothers and sisters, share this YouTube link with my friends. Okay, tell them to come and join. These are very important lectures, very important. सच में important है दोस्तों. आप आके जुड़ जाइए, इन लेक्चर को कनेक्ट कीजिए, डाउट्स को पूछिए. ओके, इस समय तो मैं डाउट नहीं दे सकता क्योंकि हमें अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट को हम थोरोली प्रैक्टिस करना है. इसलिए इस समय मैं आपके डाउट नहीं क्लियर करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह in WhatsApp group I will clear your doubt. You write your doubt and tell me in WhatsApp group. I will clear your doubt. I will clear your doubt in the WhatsApp group. One student had asked me, his question is not getting, just wait a minute, I will remember his question. He has asked me the question, anyone can go to WhatsApp and check what's the question. I will answer him. Yes, here. Write principle and procedure of gram staining. My dear brother or sister, gram staining, they are not asked directly gram staining. They have asked, write the techniques, okay, techniques to identify the bacteria, identification of the bacteria. Here gram staining, it is one of the very important technique. Gram staining, simple staining. Here gram staining and acid fast staining, these two staining comes under the differential staining. In tomorrow's class we will discuss that. You don't worry about that. Differential staining. Okay, this is the doubt of that friend. You can write this gram staining or simple staining, differential staining to that identification of the bacteria. By using these staining techniques, we can easily identify the bacteria. Yes, my dear brothers and sisters, thank you for cooperating me. Really इट फील्स मी वेरी हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सभी आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो. सच में एक अलग सा फील हो रहा है दोस्तों. इसी तरह सपोर्ट कीजिए आप मुझे. इंशाल्लाह हम
पूरे पेपर्स को क्लियर कर डालेंगे, जिसके भी जितने भी बैक होगी ना पेपर्स, उन सभी पेपर को हम क्लियर कर डालेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बाय।